हेलो गाइस, माय नेम इज़ वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना गैरेज। हमारे पास आई है टाटा नेक्सॉन पेट्रोल इंजन जो स्टार्ट नहीं हो रही है। कस्टमर का कहना है अचानक से ऑयल प्रेशर की लाइट आई, मीटर में दिखाई दी। फिर भी मैंने थोड़ी देर गाड़ी चलाया, हाईवे पर फंसा था और अचानक से गाड़ी में पिकअप टूट गया। धीरे धीरे फिर बंद होना चालू कर दी, इंजन साउंड बहुत कर रहा था। ऑयल प्रेशर की लाइट से मैंने कंप्रेसर बनाया, नहीं साउंड सही नहीं है, कंप्रेसर नहीं हो रहा है, साउंड सही नहीं आ रहा है। रैपिड कवर खोला जाएगा। वीवीटी सेंसर में एमरी बहुत सारी है, इंजन खोलना ही पड़ेगा। टाइमिंग चेन तो इतनी ढीली हो गई है, लग रहा है कि गाइड टूट गई है। चेक करेंगे इसमें भी क्या फॉल्ट है। चलो मेन पुली स्टेशनर, इतनी एमरी है बोल्ट के ऊपर। कस्टमर का कहना था कि भाई अगर हो सके तो चालू कर दो, तो हमने ट्राई करा था। बाकी ये देखो वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में एमरी है। इसका इंजन उतारे बिना तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। रोकर ये सारे की सारी टूट गई है, एक साइड की पूरी पट्टी टूट गई है, यानी वाल पे मार पड़ी होगी। कस्टमर को बोल देंगे हम कि भाई इंजन उतारना पड़ेगा। इंजन उतारने की प्रोसेस चालू करते हैं। मीटर लगा दिया, अंदर गैस बहुत सारा है एसी का, तो हम इसको रिलीज़ कर देंगे, सारा गैस निकाल देंगे। उसके बाद कंडेंसर और रेडिएटर के साथ में नीचे से प्लेट खोलकर 12 नंबर के 2 क्लैंप से इसको बाहर निकाल। कंडेंसर और रेडिएटर को दोनों को साथ में नीचे से निकाल लेंगे हम। नीचे का माउंट खोल लेंगे। साइलेंसर भी बाहर निकाल लेंगे आगे से।
Mm-hmm.